Dear children, good morning one and all. Then last class video somebody told you couldn't hear properly. That's why we are going to discuss about that. Okay. Then Bhashakyan side we are going to discuss. Okay. Then first exercise is भाववाचक संख्या शब्दों से विशेषण बनाए. Give adjectives for these abstract nouns. What do you want to do? You know already we learned what is भाववाचक संख्या. Okay. Or विशेषण also. Okay. What is भाववाचक संख्या? भाववाचक संख्या means in English abstract noun. Okay. Abstract noun means we can't touch, we can't see. Then we can feel only. So not only that, we can't use our five sense also. Okay. So that is called abstract noun. हिंदी में भाववाचक संख्या. ओके. भाव का विशेषता बताने वाले शब्दों को भाववाचक संख्या कहते हैं. ओके. विशेषण मीन्स adjective. Adjective means what? Describing word of noun, that is called adjective. Okay. Here some भाववाचक संख्या are there. Then you should change that adjective. Okay. So what are the words we can just look. विस्तृति. विस्तृति is the भाववाचक संख्या. उसका विशेषण शब्द विस्तृत. ओके. आनंद मीन्स आनंदित. उसका विशेषण शब्द आनंदित. सघनता. सघनता इज द भाववाचक संख्या. इसका विशेषण वर्ड सघन. विस्तार. नेक्स्ट वन इज विस्तार. विस्तार इज द भाववाचक संख्या. उसका विशेषण शब्द विस्तृत. ओके. शांति. नेक्स्ट वन शांति. शांति इज द भाववाचक संख्या. उसका विशेषण शब्द शांत. ओके. नेक्स्ट वन प्रदूषण. प्रदूषण इज द भाववाचक संख्या. उसका विशेषण प्रदूषित. नेक्स्ट वन पराक्रम. पराक्रम इज द भाववाचक संख्या. उसका विशेषण पराक्रमी. ओके. तिरस्कार. तिरस्कृत. लाइक दैट. कृतज्ञता. कृतज्ञ. विद्वता. विद्वान. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड नो? Okay, then next we are going to discuss the second exercise. What is the exercise? Listen. मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखें. What do you want to do, children? Write the word and suffix separately. Okay, write the word and suffix separately. Okay, we already studied what is suffix. Okay, after the main word we adding some words, that is called suffix. Okay, one main word is there, then after the main word we adding some particular words, that is called suffix. हिंदी में प्रत्यय. ओके. देन मूल शब्द के बाद में आने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं. Okay, then just we can look what are the words are there, then how it will अलग separate it. Okay, then कैसे मूल शब्द एंड प्रत्यय शब्द अलग करती है. ओके. लिसन. द मूल शब्द सांसारिक. ओके. सांसारिक इज द मूल शब्द. देन हाउ इट विल सेपरेट? संसार. ओके. संसार प्लस egg. So here संसार is the मूल शब्द and egg is the प्रत्यय शब्द. Next one look. अपराधिक is the word. अपराधिक. Here in your textbook अपराधिक maybe it's a printing mistake. Okay, correct it. अपराधिक. Okay. अपराधिक is the word. Then how it will separate with प्रत्यय with the suffix? Say अपराध. अपराध प्लस एक. सो हियर अपराध इज द मूल शब्द, एक इज द प्रत्यय शब्द. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज शैक्षिक. शैक्षिक हाउ इट विल सेपरेट बताइए.
शिक्षा plus egg. Here शिक्षा is the मूल शब्द, egg is the प्रत्यय शब्द. Okay, next one ऐतिहासिक. Say इतिहास plus egg. So here इतिहास is the मूल शब्द, egg is the प्रत्यय शब्द. Okay, next word is पुष्पित. अलग करो. पुष्प प्लस इद, पुष्पित. ओके, सो हियर पुष्प इज द मूल शब्द, इद इज द प्रत्यय वर्ड. ओके, देन नेक्स्ट वन प्रतिष्ठित. प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा प्लस इद, प्रतिष्ठित. ओके, हियर प्रतिष्ठा इज द मूल शब्द, इद इज द प्रत्यय शब्द. ओके, नेक्स्ट वन प्रभावित. प्रभाव प्लस इद, so it will be prabhavit. So prabhav is the mool shabd and id is the pratyay shabd. Okay, abamanid. Next one abamanid. Abaman plus id. Here abaman is the main mool shabd, id is the pratyay shabd. Okay children, understood now? Next we are going to discuss about what third exercise. What is the exercise? Look, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे. Nothing is not there. We already learned what is synonyms. Okay, we know, everybody know one word has so many another words but meaning same. Okay, same meanings. That is called पर्यायवाची शब्द or synonyms. Okay, then look, what are the words are there? Makan. Makan means घर. Okay, घर or bhavan. Okay, so makan means meaning house, English meaning house. Okay, then घर and bhavan also same meaning word, house. Next one nauka. Nauka means boat. The synonyms word nav, tarini. Okay, next one shikshak. Shikshak means teacher. Then synonyms word guru, adhyapak. Next one mithya. Mithya means lie. Okay, then synonyms word jhoot, asati. Okay, next word gunah. Gunah means crime. Okay, then synonyms word aparadh, paap. Okay, then next one parakram. Parakram means adventurism. Okay, so sahas, veerada is the synonyms word. Okay, veerada are the synonyms word. Okay, so dhan means wealth or money. Okay, so synonyms word daulat, rupaya, paisa, etc. Okay, next one koshish. Koshish means work hard or try. Okay, then synonyms word prayas, prayatna. Okay, next fourth exercise is निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे. Nothing is not there. Only write the anonyms word. Okay, we already studied anonyms word, many anonyms words. Then what are the words are here? We can just look. Udas, opposite word prasanna. Layak, opposite word nalayak. Nyay, opposite word anyay. Jhoot, opposite word sach or satti. Okay, next puraskar. Puraskar means dhand. Punni, paab. Kam, zada. Sajjan, durjan. Okay, next look. Next fifth one, it is not that much important. Then also we can just discuss related the sha, sha or sa letters. Okay, then when you pronouncing these are the letter, then you just find it where touching your tongue. Okay, to touching with the teeth or your
mouths up. Okay, you just find it, you pronounce and find it that. Okay, so like that some words you should find it and write in your textbook. Okay, sha, sha, sa. Okay, many sha word we already learned. Khamoshi, shikshak, shakti, le, shabash, many words. Okay, then using the sha also, pradushan, varsh, no, yeah, like that many words. Pradishta, no, like that. Then next one sa, many words we know. Sajjan, samidhi, sammanid, no, sparsh, saath. Okay, many words are there, find it and write it. Okay, so next we are going to discuss about the sixth exercise. Okay, then sixth exercise is शुद्ध शब्द पर गोला लगाए. Circled the right words. Okay, 3 words are there, but 3 are not correct word. One only is the correct word. Which one is the correct word? Okay, find it and put the circle. Okay, draw the circle. Okay, just look. First one, Ashirvad, Ashirvad and Ashirvad. Okay, first here, second one is the correct word. Okay, then second one, Ikatha, Ikatha, Ikatha. Okay, see here, third one is the correct word. Okay, next one, Sringala, Srangala, Sringala. Okay, so here first one is the correct word. Next one, Sthai, Sthai, Sathai. Okay, here fourth one, first one is the correct word. Okay, next one, Pradushan, Pradushan, Pradushan. Okay, so last one is the correct word. Understood, children? Nothing is not there. Then just find it which one is the correct word and just circle it. Okay, next one, look. Then seventh exercise is क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं. Okay, then telling about the adverb. Okay, adverb means what? Describing word of verb, that is called adverb. Okay, then हिंदी में क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. Okay, children, understood now? The क्रिया विशेषण 4 प्रकार है. कितने प्रकार? 4 प्रकार है. Then first one is पहला रिधिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण एंड चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. से फर्स्ट वन रिधिवाचक क्रिया विशेषण एंड सेकंड वन स्थानवाचक क्रिया विशेषण, third one कालवाचक क्रिया विशेषण and fourth one परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. Okay, now then we can just look what is the definition. Okay, रिधिवाचक क्रिया विशेषण. रिधिवाचक क्रिया विशेषण means रिधि या तरीके के बोध कराने वाले शब्दों को रिधिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. Okay, so here telling the manners of adverb. Okay, then you know already. Then the manners of adverb. Okay, ये वन रिधि या तरीके, इसके बारे में बताने वाले शब्दों को रिधिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. Okay, second one स्थानवाचक क्रिया विशेषण. Then just find when you hearing the name, then you can find it what is it. Okay, स्थान means एक place. Okay, जगह और स्थान के बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. Okay, so here place of adverb, in English place of adverb. Okay, next one
कालवाचक क्रिया विशेषण. कालवाचक क्रिया विशेषण मीन्स समय के बताने वाले समय के बोध कराने वाले शब्दों के कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. ओके सर, इन इंग्लिश टाइम ऑफ एडवर्ब. ओके, टाइम ऑफ एडवर्ब. देन फोर्थ वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. हियर किसी वस्तु की नाम या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. ओके, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इन इंग्लिश डिग्री ऑफ एडवर्ब. ओके, देन any measurement, then mentioning any measurement, for example an uncountable measurement. Okay, we can't count it, that uncountable. For example, little, few, like that, no, like that examples. in हिंदी में थोड़ा, बहुत सी, कुछ है उसी तरह आने वाले शब्दों. ओके, so listen, I think all of you understand and look your textbook. There are some sentences. Then read the sentence carefully. Then find it which word is the kriya visheshan and which type of kriya visheshan. Okay, just we can look now, children. Look, कभी कभी फर्स्ट वन, कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे. Here say कभी कभी is the kriya visheshan word. Then which type of kriya visheshan? कभी कभी. So कभी कभी means sometimes. The mention here time. Okay, that's why it is a कालवाचक क्रिया विशेषण. Okay, then second one, listen. मेरा मन दिन भर कूदता रहा. Then मेरा मन दिन भर means then mention here time. Again time, no, every day, दिन भर. Okay, so क्रिया विशेषण शब्द is दिन भर and which type of भेद क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण. Okay, next one, look. जानबूझकर मैंने उनके साथ अन्याय किया. So find it which क्रिया विशेषण and which type. जानबूझकर means knowingly. Okay, knowingly. So the telling one method, no, one method, one manner telling here. Okay, that's why it is a रीतिवाचक क्रिया विशेषण. Okay, so जानबूझकर is the क्रिया विशेषण word और क्रिया विशेषण शब्द. then रीतिवाचक क्रिया, which type भेद क्या है? रीतिवाचक. Okay, next one, वे समुद्र से बाहर आ रहे थे. then here which is the क्रिया विशेषण शब्द? समुद्र से बाहर. Okay, बाहर just one place, no, then बाहर, भीतर, ऊंचे, नीचे, no, like that. Okay, so it is a स्थानवाचक क्रिया विशेषण. No, yes. Next one, मास्टर जी थोड़ा ठहरे. Okay, मास्टर जी थोड़ा ठहरे. So which type say? Yes, परिमाणवाचक. No, then we already discussed थोड़ा, बहुत, कुछ. Okay, so क्रिया विशेषण शब्द थोड़ा and which type? परिमाणवाचक. Okay, then some examples, look related. रीतिवाचक धीरे से, जल्दी से. Okay, जोर से. Okay, like that coming words. Okay, उसी तरह आने वाले शब्द. For example of स्थानवाचक, what? वहाँ, यहाँ, इधर, उधर. के अंदर, भीतर, बाहर, भीतर. ओके, उसी तरह आने वाले शब्द. नेक्स्ट कालवाचक, सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण देखिए. क्या है? परिमाणवाचक कालवाचक व्हाट? पहले, पिछले, पीछे, आगे, परसों, कल.
उसी तरह आने वाले शब्द. ओके, समय के बोध कराने वाले शब्द. नेक्स्ट परिमाणवाचक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. थोड़ा, कुछ, बहुत सी. के उसी तरह आने वाले शब्द. Understood, children? I think all are understood. Then if you have any doubt, you can call me and you clear it your doubt. Okay. Okay. See you. Have a nice day.